Migration is life. Migration is culture. It's how dreams plan for a better future. It is how the starving reject famine, how the brave refuse to live in fear. It is the way the world was built, the ultimate law of the land. It is difficult to leave behind the place we are born. It is even harder to leave parents, children and spouse and walk into a land of uncertainty. गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं. But 1/3 of India's population do undertake this quest, the quest for survival, the quest for a better future. Shimla, the summer capital of British India and present capital of state of Himachal Pradesh, was built on the sweat and blood of migrants. Time changed. But the fight is far from over for these migrants. What makes people migrate? Let's hear the reasons for their migration. खेती करते हैं पर वहाँ देखो टमाटर करते हैं साल भर में कितने लगा 2 रुपया बिक्री होता है. उसमें क्या होता है किलो 2 रुपया दो मिलता नहीं है. जब खाने के लिए होता है जब इतना मेहनत करते हैं तो क्या बोले 2 रुपया टमाटर बेच के क्या फायदा. उससे क्या पढ़ा लिए. यहाँ तो आते हैं चलो साल भर में लाख रुपया. हाँ 1 लाख ये कमाने के लिए सारे कोई आता है ना इससे चलाते हैं हम लोग भी. वहाँ पर कोई काम नहीं है क्या? काम तो ऐसे है फिर हम लोग तो 1 बार फसल करते हैं ना. फिर अभी तो कुछ नहीं है फिर फसल करने के लिए हम लोग जाएंगे. क्योंकि हम लोग तरफ पैसा का कमी है इसीलिए. कहाँ क्यों आए? क्यों नहीं आएंगे सर. जहाँ पर पेट भरेगा जहाँ पर कबाड़ा बेचने से पेट भरेगा वहीं पर आएंगे. Migrant laborers of Shimla are not a monolithic lot. They differ significantly in skill set, source area, language and ethnicity. हिमाचल में 10 साल हो गए. 2 साल. हाँ आते हैं फिर चले जाते हैं ना. साल में कभी 6 महीने में जिससे घर प्रॉब्लम पड़ जाता है तो वापस चले जाते हैं घर. If we look at the profile of the migrant laborers, we find variety there too. Some of them are seasonal migrants, some continuously move in search of the work, some are self-employed and some even settled here. The workers stay in temporary shelter which are inadequate for dwellers to face the harsh winters of Shimla. After a day's hard labor, the day is still not over for the women. Hearth and home demand time too. Equal pay for equal work still remains a distant dream for migrant women, though the contractors deny it. 180 है मर्द लोग का. 160 हाँ बराबर काम. तो पहले तो 1 महीने के बाद पहले तो एक जैसे दिहाड़ी थी ना. मतलब 5 रुपया इधर उधर कर दिए. जब मर्द सब बोला कि मतलब ज्यादा मिलना चाहिए हमारे को बोला. फिर हमारे 15 रुपये नीचे. Potable water is insufficient, infrequent and inconsistent here. पानी के लिए भी परेशान है. सुबह आता है पाइप में. हाँ आता है जब भर सकते हैं नहीं सकते मिलता है. हफ्ते में 1 बार लाते हैं पानी. उधर क्या बौड़ी बोलते हैं उससे. पानी की भी दिक्कत होती है. इधर ही आना पड़ता पानी लेने. अच्छा नल लगा रखे हैं. हाँ हर घर में एक है कि एक? नहीं बस 2 है. The laborers we interviewed told us that supervisors and contractors take responsibility of treatment of injury during work at the worksite, but at any other illness and medical treatment still remains a burden. दिहाड़ी भी जितने दिन लगती है मतलब हॉस्पिटल में होते तो वो दिहाड़ी भी देते हैं कंपनी. बाहर से लेबर आती है उसके लिए आप कहते हो कि देखभाल करनी उनकी टैकल करते हो. वो तो उस चीज की हेडिंग हमारी नहीं है कि उनके उस चीज की मतलब जैसे कोई किसी का बच्चा कोई
जैसे फैमिली किसी की बीमार हो गई हैं, वो खुद अब जैसे इसकी जनानी बीमार है हैं, ये आज खुद भी छुट्टी पर है, उसके लिए दवाई ट्रीटमेंट जो है ये खुद कर रहा है। लेकिन हमारे पास ड्यूटी में कोई ऐसा हो जाए, बीमार हो है, उसको हॉस्पिटल में हम एडमिट खुद करवाते हैं। The working environment is dangerous at some of the sites. Children of migrant laborers are one of the most affected. They spend the formative years of their lives without proper care and attention. The parents sometimes do not have any other option but to tie up their children for their safety. It's the dream for a better future for their children that keeps the spirit of these mothers up amidst all hardships. और क्यों कम क्यों करो? इससे ये पढ़ा लिखे की कुछ नहीं है। बताना चाहते हो बच्चों? हाँ चाहता है, क्यों नहीं चाहता। छोटा बच्चा हम लोग गरीब हैं तो मतलब हम लोग भी बड़ा करना चाहते हैं बच्चों को, कि हम लोग भी दो पैसे रख सकते हैं। तो बच्चे के लिए कुछ पैसा इधर उधर से हाँ जी इकट्ठा कर दिए ना, तब हाँ जी मैं मैट्रिक फेल की हूँ। हाँ जी नहीं अनपढ़ हूँ। अच्छा, आप ये बच्चों का भविष्य के बारे में क्या सोचें? क्या सोचेंगे, तो ऐसे थोड़े मोड़े कहीं पैसा रखेंगे बोल के, हम लोग की तरफ पैसा कमी है ना। देखो उसको तो स्कूल भी पहुंचाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा, उसके लिए रोटी बनाना पड़ेगा। तो आप वहीं रहोगे? हाँ वहीं रहेंगे। Moreover, the frequent changes of location of work act as an hindrance for continuous schooling. दिक्कत तो बहुत दिक्कत है, एडमिशन थोड़ी होगा। मतलब यहाँ से अगर हम कहीं बाहर चल गए वहीं से आएंगे वही स्कूल आएंगे, बीच में तो एडमिशन नहीं लेता है। फिर वहीं रहते हैं, वहीं से कुछ दूर से आते हैं लड़का। But in some place we found a promising scenario. Here the children attend schools, they have an ambition, they are not even aware of their migrant status. बड़े होके क्या बनना है? टीचर। पुलिस क्यों बनना है? सबको मारूंगी। सबको मारने के लिए, खाली मारने के लिए नहीं, मारूंगी भी, जो गलत काम करेगा उसको मारूंगी और जो गलत काम नहीं करेगा उसको शाबाशी दूंगी। सर क्यों सर बनना है? ऐसे ही। डॉक्टर क्यों बनना है? मनुष्यों की जान बचाना। डॉक्टर क्यों बनना है? मैं लोगों की जान बचाऊंगी और लोगों को ठीक करूंगी। यहाँ पे सबको ना किसी के जख्म है, किसी को बुखार है, किसी के हाथ वो है, तो मैं उनको ठीक करूंगी। डॉक्टर। The Constitution of India provides right to movement, livelihood and profession as a fundamental right to every citizen. But these migrants are treated as a second-class citizen in their own country. Recognizing the need to ensure protection of migrant laborers, Government of India had passed the Interstate Migrant Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act way back in 1979. They are to be given to and fro fare also from there. They are brought. Some regional accommodation is to be provided for their stay. Certain say washing and water facility or certain medical first aid boxes etc. are to be provided to them. The Government of India enacted the Building and Other Construction Workers Act 1996. It provides for the constitution of a welfare board in each state to undertake social security schemes. A recent audit report of the Comptroller and Auditor General of India observes that the welfare boards have been neglected. It recommends that the welfare schemes should be implemented and monitored properly to improve the conditions of these workers. Safeguards have been built into this act to ensure the compliance. But still, why do such legislations fail? यहाँ पे कुछ करती है आपके लिए? कुछ पता है आपको, कोई स्कीम चल रही है जिसका आप लाभ ले सकते हैं?
वो तो पता नहीं है, नहीं पता है। घर पे तो है, हाँ देती है, किसान वालों को ही में साल में देती है 25,000 पैसा, जैसे हाल चलाते हैं कि राशन सब मिलता है। यहाँ तो नहीं है। यहाँ पे जो कोशिश नहीं जानने की नहीं करते हैं, पर वो करो प्रधान लाओ तो यहाँ लाओ, क्या कहाँ से हम ढूंढेंगे अभी प्रधान मुखिया। हाँ पर्ची कभी तो प्रधान भी यहाँ का सही नहीं न कराता है, जब बाहर वाले हैं तो क्या करेंगे। आपके लिए यहाँ पर सरकार कुछ करती है? नहीं, आजकल तो क्या करेगा सरकार। कोई राशन कार्ड यहाँ पे? नहीं, हम लोग का कुछ नहीं है राशन कार्ड। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता? नहीं सरकार की? नहीं, हम लोग तो इससे खाते हैं कि 20-25 रुपया चावल खाते हैं। अच्छा, आपको चावल भी सस्ते नहीं? नहीं मिलता है, आटा भी हम लोग 20-30 रुपया खाते हैं, कहाँ सस्ता मिलेगा। वहाँ सरकार करती है आपके लिए कुछ? सरकार तो उधर करते हैं, सारे कुछ देता है। यहाँ नहीं देते? यहाँ तो कुछ नहीं देता। हम लोग का घर तरफ तो सारे राशन कार्ड सारे हैं, सारे मिलते हैं। Lack of awareness of such schemes among migrants themselves is another hindrance for their success. The foremost problem that leads to denial of protection of these migrants under the Act is identification of the migrant laborers. They don't get the benefit of social security schemes like public distribution system, as such schemes are not portable outside their home state. Down at the office had to fill out the forms, a pink one, a red one, colors you choose. Went to the counter to see what they think. They said it does not count, man, it ain't written in ink. I don't trust anybody, least not round here, because it's not fun being an illegal alien. Benefit of social security schemes should be available across the states, like in Rashtriya Swasthya Bima Yojana. They have to give any building the construction worker is, there is no other basic requirement. If he is a building the construction worker, he has to be registered with the board, and board will immediately register them. If they move an application, they will be registered. Social apathy of locals to the migrants is another issue of concern. अब दिक्कत तो ऐसी जी आती है क्योंकि यहाँ गुंडागिर्दी भी बहुत होती नहीं, कईयों काम धंधा होते हैं, दारू शराब खुलेआम से बेचते, भांग धतूरा खुलेआम से बेचते, कहीं मेरी शिकायत करेंगे तो हमारे को पिटाई उल्टी कर देते। अब हमारे बच्चों को खतरा होगा नहीं होगा, किसकी रिपोर्ट दे? और पुलिस के पास जाएंगे तो 1 मिनट के लिए आएंगे, फिर बाद में अपना जो है टाल भराई करके चले जाते। Political apathy is another blow to the migrants. Even when justice is on the sides of migrants, politicians and bureaucrats side with the locals, as migrants do not have any voting power. You know, initially when I thought that they don't have the incentive, but our experience between Andhra and Odisha has revealed, you know, in Andhra, they are sourcing Odia teachers from Odisha to teach the children of the people here. There could be a law and order problem. There could be, you know, adjustment problems within the state. If something happens, then what do they do? And there have been crisis situations like this. This plight of migrant workers has no place in a civilized society. The founding fathers of our great nation dreamt of an egalitarian society where every citizen enjoys equal rights. We were sensitized to the plight of migrant laborers on observing the children of migrant laborers who were working on a construction site nearby. It is said that the charity begins at home. As a small step to help them, we started a crèche for these children. Today, the smile on their faces fills our heart and lifts our spirit. We brought these issues of migrant labourers to the attention of Mr. Anil Swarup, Additional Secretary in the Ministry of Labour and Employment, Government of India. I must confess that I had not understood the Himachal context as well as I do now. I think it's important. And since you all are indulging in it, we need to take it to its logical conclusion. So you can rest assured that I'll be writing to the state government. This shows things can move if someone is ready to take up the issue.
But who will take up all this for a population who has no voice? Internal migration is an essential and inevitable component of economic and social life of our country, given the regional imbalances and labor shortages. Safe migration should be promoted to maximize its benefits. A voice unheard, a right denied leads to an uprise that strikes at the heart of all that we hold sacred as a nation. Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school.